Okay, so we are here again with the relevancy of facts forming part of same transactions. Same transactions. It is none other than Section 6 of Evidence Act. Okay, so what do you understand with the same transaction? And we have already discussed this keyword in our previous lectures. Same transactions. देखिए होता क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि spontaneous events, spontaneous, number one. Number second is with immediate effect. Immediate effect. Number second, no delay. No delay while registering, while lodging or registering, lodging, lodging the complaint or registration of FIR or lodging an FIR. So ये तीन keywords हैं for res geste, which is none other than our section 6 of Evidence Act. इसमें होता क्या है मेनली, देखिए एक चीज और मार्क कर लेते हैं. नंबर 4 नंबर पॉइंट, द evidentiary value of spontaneous or immediate complaint. All right. So here the section what says relevancy of facts forming part of same transaction. See, सिर्फ अकेले इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होता, but it is additionally it requires circumstantial evidences. Also, it requires some sort of relevant fact for corroboration. Okay. तो ये हमारे कीवर्ड है स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट इफेक्ट. बट ये होता है क्या, ये कुछ नहीं होता. ये फॉर एग्जाम्पल एनी क्राइम हैपन, एनी सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल ए हियर tends to beat B with a grievous hurt. Okay, A tends to beat B and his intention was to cause him a grievous hurt which caused him death. उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है B की. Now with the bracket, yeah, B is no more. So now what will happen is that B with some sort of remaining कुछ सांसें उसमें बच जाती हैं, with remaining breaths, he cited to C. तो C को मरते मरते ये बोल जाता है कि that A has beaten me. A ने मुझे मारा था. Okay. So that will be the part of same transaction. Okay. We've also covered that there was a case law which was its name was Dudhnath Pandey. इस केस में क्या हुआ था that his sister Ranjana immediately rushed to the police station and she instantly registered an FIR in context of his brother's death, was named Pappu Bhaiya. So these are some sort of relevant portion, some sort of keywords what I have mentioned over here. So now we will move on to some case laws. Here is reg versus bedding fee. Now what exactly happened is this in this case? It's basically an English case where the woman with a throat cut came out of the room shouting that, "And see what Bedingfield has done to me." So in this case, the Bedingfield was the main accused, but the court did not admit this relevant fact. Obviously, see, अब इसमें होता क्या है कि नहीं बता देता हूँ. इस केस में होता क्या है कि बेडिंगफील्ड जो इस केस में मेन अक्यूज था, this girl invited her. इस दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे. तो she invites him at his place and with an immediate effect होता क्या है, मिलने आते हैं ये दोनों और suddenly Bedingfield
जो होता है, he runs a store. Okay, he runs a store. And what happened in this case, that Bedingfield वहां अब उसके घर से निकलता है, एंड टू असिस्टेंट जो इस लड़की के ऑफिस में काम करते हैं, जो इस लड़की बेसिकली लॉन्ड्री सर्विस में थी, तो जो दो लोग थे विच वॉज असिस्टिंग हर, दे सॉ हर lying on the floor with their throat cut. And in the medical examination जो निकल के आता है that it was a suicide case. The cut was that sense of deep, वो कट इतना गहरा नहीं था, या फिर वो गहरा था जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है that it was the self harm case. And the main accused, the main culprit, the burden shifted on the Bedingfield. Later on, she had died, but the court in this case held that this is not a case of Section 6 of Evidence Act, because there was a huge delay. काफी देर हो गई थी, और intentionally जो लड़की थी, and she intentionally shouted कि see what Bedingfield has done to me. So instead of telling this, there was a huge delay, and there was a lag in time. तो जब भी ऐसी चीजें होती हैं, सेक्शन 6 constantly tells about that you have to act in a prompt way. आपको बहुत जल्दी एक्ट करना है. Only then the section 6 will be the relevant. The res gestae, which is the continuous offense or the continuous event happening, that will take place, and only then in case that it will be relevant. So okay, next case we have Tepper versus the Queen. अब इसमें कोर्ट देखिए, पहले वाले केस में तो कोर्ट डिनाई करता है कि जस्टिस कॉकबर्न्स चीफ जस्टिस हेल्ड दैट the statement was not admissible as a res gestate as it was made after the incident was over. घटना होने के टाइम आपको ये एक्ट करना है, घटना होने के बाद नहीं. अब फॉर एग्जांपल एक केस और यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज इट वाज कपूर सिंह राणा का केस है. ओके, अब इस केस में होता क्या है, बेसिकली accused plus lady, they both were known to each other. One fine day, accused visited the lady's house and burned down her with an acid. उसके ऊपर वो एसिड फेंक देता है. The acid was not that much harm. वो एसिड जो था वो H2SO4 नहीं था, it was a basic toilet cleaner वाला एसिड था, तो उससे उसकी डेथ कॉज तो नहीं होती. बट लेटर ऑन दैट लेडी डाइड बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, बिकॉज वो एसिड अटैक की वजह से नहीं मरी. ओके, in that case she already had some health issues in the previous times. But at the moment when accused threw the acid on her, and while accused was leaving the house, जब वो घर से बाहर आ रहा था गेट को लॉक करके, the lady's mother M saw her. लेडी की मदर ने उसे देख लिया, and she immediately called the police. पुलिस भी आ गई, and she in her police statement her mother said that कि मैंने ये कपूर सिंह राणा को जो है बेसिकली उसने कपूर सिंह राणा का नाम नहीं लिया इन दैट केस. ओके, व्हाई? बिकॉज पुलिस आस्क्ड इन अ नैरेटिव फॉर्म. नैरेटिव फॉर्म में, अब नैरेटिव फॉर्म क्या होता है, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस विल नॉट क्वेश्चन यू, बेटर यू इन ए नैरेटिव फॉर्म, आप स्टोरी टेलिंग करेंगे पुलिस स्टेशन में, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म. अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर सवाल जवाब होते सो तो कुछ और बात होती. ओके, सो हियर वी नो दैट दी की मदर ने कपूर सिंह राणा का नाम नहीं लिया. शी सिंपली सेड दैट माय डॉटर हैज बीन बर्न डाउन विद एन एसिड अटैक, और ये जो है ये हुआ है. एंड when at the time of trial, during the trial, the trial period commenced होता है, then her mother said कि कपूर सिंह राणा ने उसको उसकी जो डॉटर थी उसको एसिड से अटैक किया था. ओके, so court questioned, so in the court they questioned that पहले तो आपने नाम नहीं लिया था during the police investigation. So
कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट जस्ट बिकॉज वो नैरेटिव फॉर्म में था, इनका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो इंक्वायरी हुई थी, वो नैरेटिव फॉर्म में था, दैट wasn't in question answer form, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं था, इट वाज इन नरेशन फॉर्म, simply the storytelling. Okay, so court concluded that okay, but we cannot admit that statement, and what her daughter said cannot be dying declaration. वो dying declaration भी नहीं हो सकता, and it cannot be admit as a res gestae. और ना तो सेक्शन 6 में वो स्टेटमेंट फॉल कर रहा है, ना ही वो डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज there was a time lag, there was a huge delay while lodging an FIR or lodging a complaint. So section 6 primarily deals with that you have to act promptly, otherwise वो relevant नहीं होगा. नेक्स्ट केस पे जाते हैं, टेपर वर्सेस क्वीन 1952. emphasize the necessity for statement to be closely associated with in time and circumstance with the event to qualify as a res gestae. So this is the crucial term, the crucial term, that time and circumstances when the event to qualify as res gestae. अगर res gestae उसे बनाना है, you have to act promptly in a given time manner. People versus De Simon demonstrated the challenges in admitting witness statement as a part of res gestae when not sufficiently interwoven with the principal event. res gestae में के अंदर अगर किसी के सामने कोई घटना होती है, किसी क्लोज वंस के सामने, फॉर एग्जांपल दिस रंजना केस, ओके, उस केस में घटना होती है और उसमें अगर चैलेंजेस आते हैं admitting the witness statement as a part of res gestae, then court can sufficiently intervene with the principal event. कोर्ट यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी चेक करेगा एंड विच विल अलाउ द विटनेस स्टेटमेंट टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ res gestae, अगर वो इमीडिएट इफेक्ट पे हो तो. अगर वहां पे इमीडिएटली बेसिस पे अगर कोई प्रेजेंट है, कह सकते हैं कि चांस विटनेस, ओके, ये टर्म भी आएगा कि कोई चांस विटनेस बाय लकीली कोई विटनेस वहां प्रेजेंट था एंड ही इमीडिएटली रश टू द police station or registering any sort of complaint, so that will fall under the res gestae. Next case here we have is Gantela versus Rao versus state of Andhra Pradesh, 1996. The appellant were accused of setting a bus on fire. Okay, this was the case of basically public property damage and homicide. Okay, in which resulting in the death of 23 people and injuries to the several others. 23 लोग यहाँ पे मर गए थे और several injuries were being caused. So the statement of the victims were recorded by the judicial magistrate. These statements were presented as an evidence under section 6 by whom? कौन present करेगा भाई? The prosecution itself, claiming that they were the part of res gestae. However, the Supreme Court declined to admit these statements as evidence under section 6. Why? Because there was a huge, again, time lag plus circumstances. बिकॉज इसमें बेसिकली बोला गया है कि अगर टाइम कंप्लेनेंट को अगर टाइम मिलता है और इन दैट केस इफ समथिंग हैपन आफ्टर द इवेंट गॉट ओवर, या तो क्राइम पूरा घटित हो जाए, ओवर होने के बाद देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस. तो फैब्रिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू res gestae. अगर ये होगा तो ये नहीं होगा. ओके, अगेन इससे क्वेश्चन में आते हैं, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू res gestae. Number 3, what we have is that number 3 simply tells us circumstances plus time lag plus complaint. अब complaint में आप लिख लीजिए immediate effect. It will also be proportional to what? Section 6, which is known as res gestae. Okay, so here we have a conclusion is that ठीक है, एक कुछ case laws है that we have discussed. So in next video we will discuss the section 8.
So okay, I hope you must have got some gist about this video. So okay.